next year जाना है कि नहीं? This is, I think, a common question from a lot of you. So let me talk about that. Let's see, you're going to a certain score this year, and that score will give you a certain level of college. So you have to think about worst case, and if you go for CAT next year, three things can happen. Your score can go down, your score can remain the same, your score can go up. So if you have a assurance that ये मेरा bottom performance है, इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा bottom performance है, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा, तो in that case what happens is तुम्हारा जो score है, if this is my bottom performance, if that is the case, तो तुम्हारा जो score है इस situation में, तो अगर तुम ये देखते हो अगले साल में मेरे को same आ जाएगा score, so then you realize that I'll go to the same level of colleges next year also. And if I am able to improve score, if your outcomes next year is same score or better score, in that case, specifically if you don't have more than 3-4 years of work ex, तब तो it is definite कि you should give another attempt and not join a lower level B school, because MBA is your last degree, so you don't want to spoil it by going to a second level B school. तो एक फैक्टर है कि अगर मेरे को लगता है कि मेरे को सेम परसेंटाइल तो आ ही जाएगा, वर्स्ट केस एबिलिटी तो कंट्रोलेबल है और एबिलिटी ऊपर ही जाएगा जो अभी का एबिलिटी है. परफॉर्मेंस तुमको लगता है कि इतना खराब परफॉर्मेंस से नीचे नहीं जा सकता है मेरा, जो भी है तुमको 88 आया, 85 आया, 78 आया, 91 आया. द ट्रेड ऑफ देन इज कि ओके, इफ आई गेट टू बेटर परसेंटाइल नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू बेटर कॉलेज. 88 इस साल आया, अगले साल 97 ले आओगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अ बेटर कॉलेज. द डाउन साइड इज दैट यू विल गो टू द सेम कॉलेज बट 1 year जूनियर बैच.